और वो प्रेपडोर की वेबसाइट में कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, सम मोर क्वेश्चंस आर बीइंग एडेड। सो जो लोग कुछ लोग पेपर शायद नहीं दे पाए, मेरे पास मैसेज आया था, इट विल बी लाइव विद इन अ डे और टू। सो पेपर इज अपलोडेड, पेपर दोबारा आ जाएगा वहां पे, डोंट वरी। तब तक आप अपनी डीपीपीज एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते रहिए। पहले चैप्टर की वर्कशीट, नॉट वर्कशीट, जो टेक्स्ट बुक है, द बुक दैट यू आर सपोज टू कलेक्ट फ्रॉम हियर, उसकी पीडीएफ बन गई है, वो आज मैं शेयर कर दूंगा आपको। ओनली द एक्सरसाइज relation between electric field and potential. So we calculate potential difference. Potential difference होता है minus of integration of E dot dr, और उसको फिर हम ex dx plus ey dy में लिख सकते हैं। If suppose we know the component, then ex integration with respect to dx, ey with respect to dy, ez with respect to dz, and if electric field graph is known, then the minus times area under the graph. Potential difference is minus times area under E versus R graph. And we did one question based on this. If electric field is uniform, for uniform electric field, E बाहर आ जाएगा, it will be minus E into delta R, और ये delta R कौन सा है, that we'll understand. Right? ये क्या था अपना last topic? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, then we have to integrate this from infinity, because work done in moving the charge from infinity to current position is potential. So for electric potential of any charge configuration, अगर हमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो हम उससे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, if we integrate this from infinity to r. E dot dr is integrated from right. Electric potential at any point is integration of minus infinity to r E dot dr. ओके, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता है, पोटेंशियल निकालना है, सपोज अपोजिट, इफ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग पोटेंशियल फंक्शन, if we have to calculate electric field using potential, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके मिलता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन, and opposite of integration is differentiation. So E will be, electric field is given as minus of d by dr, but d by dr is normal differentiation is rate of change. If potential is scalar, if potential is scalar, potential is scalar, the rate of change of potential cannot become vector. So हम इसको normal differentiation नहीं लिखेंगे, this will be a special differentiation which is called gradient. Electric field is minus of del V by del R. Here del by del R is called gradient. This is not the differentiation. Differentiation हम किसी भी direction में कर सकते हैं, but gradient is a vector operator. और gradient को जब हम open करते हैं, gradient is basically finding the rate of change along the shortest path. Shortest path means along the perpendicular. So दो पॉइंट से पास होने वाले सरफेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल। यस, एक डाउट है सर, ग्रेडियंट मतलब क्या, फिर से एक बार रिपीट करना। किसी भी क्या कहते हैं, कोई भी वैल्यू या यूनिट को क्या कहते हैं, मतलब ग्रेडियंट एक तरह से रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट करता है, बट रेट ऑफ चेंज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन
It's not randomly in any direction, it is only in perpendicular direction. So हम इसको open करते हैं, it is a vector quantity. Then we have to differentiate v with respect to x. जब हम potential को x में differentiate करेंगे, then for that differentiation we take y and z to be constant, that is I cap. Then we differentiate potential with respect to y. For differentiation of y, we take x and z to be constant. This will be the second j cap component. Third, we differentiate potential with respect to z, and for that differentiation, we take x and y to be constant. That gives k cap. So gradient is nothing but rate of change only, differentiation only. But differentiation is स्केलर, वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं हम, किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं. But gradient has a fixed direction, and that fixed direction is perpendicular direction. अब perpendicular किसके बीच में, that we will understand in today's class. The difference between the normal differentiation and partial differentiation, इसको हम partial differentiation बोलते हैं. When we differentiate with respect to x, taking y and z constant, to differentiate with respect to y, taking x and z constant, and when we differentiate with respect to z, taking x and y to be constant. So E is Ex times I cap plus Ey times j cap plus Ez times k cap, where Ex is the x component of electric field, which is given by the partial differentiation of potential with respect to x. तो ये जो टर्म लिखा हुआ है E is equal to minus of del V by del R, इसका मतलब electric field is defined as negative of potential gradient. Electric field is defined as negative of potential gradient, and gradient का मतलब है rate of change only, but only and only in perpendicular direction. Electric field is negative of पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग सेपरेटली एक्स कंपोनेंट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल. This is called partial differentiation or partial derivative with respect to x. x में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट की तरह एज्यूम करेंगे. कांस्टेंट मींस लाइक अ नंबर that gives x component. We differentiate with respect to y minus of dv by dy, and for that x and z is taken to be constant. Partial derivative with respect to y gives y component, j component, and z component of electric field is partial derivative with respect to z, and for this derivative x and y to be taken as constant. Partial differentiation with respect to z. Ex, Ey and Ez अलग अलग हम कैलकुलेट करके E electric field becomes Ex I cap plus Ey j cap plus Ez times k cap. Again, हमें अगर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फंक्शन पता है एज एक्स वाई जेड, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज नोन, उस पोटेंशियल के फंक्शन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे with the help of this partial derivative. Ex is minus of del v by del x, Ey is del dv by dy, and Ez is dv by dz. Right? So एक एग्जांपल से समझते हैं. ये जो हमने पोटेंशियल निकालने के लिए किया था, that was kind of partial integration. Like here, Ex को हम dx में इंटीग्रेट करते हैं, Ey को dy में इंटीग्रेट करते हैं, Ez को dz में इंटीग्रेट करते हैं, और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे या पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. X component is minus dv by dx, y component is minus dv by dy, and z component is minus dv by dz. Example, let's say potential at a point x, y, z is given as
potential at point x, y, z is given as V is x, y, z as minus x, y square plus y, z cube plus x, y square z. Calculate the electric field in this potential. Calculate electric field at point 111. Calculate electric field at 111. So हमें पोटेंशियल का फंक्शन पता है एज अ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड. इससे ई एक्स कैलकुलेट करेंगे, ई वाई कैलकुलेट करेंगे, ई जेड कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें एक्स वाई जेड को 111 पुट कर लेंगे. X component of electric field is minus dV by dx, and for this y and z will be taken as constant. So minus minus plus हो जाएगा, d by dx of x y square plus y z cube plus x y square z. अब इसको तो डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएशन के लिए y and z should be considered as कांस्टेंट नंबर. सो कांस्टेंट नंबर को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं. पहले वाले टर्म में y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x. सेकंड वाले टर्म में y इज कांस्टेंट, z इज कांस्टेंट, y z क्यूब कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. और लास्ट वाले में y स्क्वायर z बाहर कॉमन, dy dx ऑफ x. पहला टर्म y स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y स्क्वायर टाइम्स z. This is the electric field x component. At a position of x, y, z will be y square plus yz. Next is y component. Y component calculate करने के लिए we differentiate with respect to y and we consider x and z to be constant. Ey is minus dv upon dy. X and z will be constant. अभी y में डिफरेंशिएट करेंगे. ये आगे समझ में ax कैसे कैलकुलेट किया. For this differentiation we have to consider y and z as a number. Consider y and z as a number. Number को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं. So this is taken outside. अब सेकंड वाले केस में x और z को हमें कंसीडर करना है एज अ कांस्टेंट नंबर एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. So this is minus of इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन. ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, d by dy of x y square plus y z cube plus x y square z. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. x को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट और z को x कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, dy by dy y स्क्वायर. बाहर पॉजिटिव क्यों जाएगा हाँ बेटा, सर? पॉजिटिव क्यों जाएगा बाहर? ये v नेगेटिव था और एक नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है. ओके सर. जब वहाँ v की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसलिए यस.
Z cube r common d by dy of y और सेकेंड वाले टर्म में x and z constant d by dy of y square. Y square का डिफरेंशिएशन 2y plus 2xyz. Similarly, electric field component in z direction is minus dv by dz. X and y constant, so x into y square will be constant. Constant का differentiation 0. Second वाले में y constant taken outside d by dz of z cube. Second वाले में x y square constant d by dz of z. This becomes 3yz square plus xy square. This is electric field in z direction. हमने x component कैलकुलेट कर लिया, y component कैलकुलेट कर लिया, z component कैलकुलेट कर लिया separately. And now if you have to calculate at 1 1 1, we'll substitute the value as 1 1 1. Ex times I cap plus ey times a cap plus ez times j. That will be the electric field at a general position of x comma y comma z, and then we will substitute the coordinate. बेटा समझ में आ रहा मैथ्स कैसे हो रही है? सुशांत, you understood this partial differentiation concept? सुशांत, Yes, sir. बेटा समझ आया क्या करना चाहते हैं? नहीं, पार्शियल का मतलब जब x का सर डिफरेंस सर सब्स्टिट्यूट करके फिर आई कैप जी कैप की कैप में लिखना है ना? हाँ हाँ आई कैप देखिए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई वो आ गई y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z. This electric field at a position of x y z. सर आंसर क्या 2i कैप प्लस 5k कैप प्लस 4k कैप है? Right. Y square plus yz, 2xy plus z cube plus 2yz, 2xy. Last is 3yz square plus xy square k cap. This is the general formula for electric field at a position x comma y comma z. Substitute x as 1, y as 1 and z as 1. It becomes 1 plus 1 2. So 2 I cap plus 2 plus 1 3 plus 2 5 j cap plus 4 times k cap. Magnitude y is root of 2 square plus 5 square plus 4 square. So 4 plus 25 plus 16. Right? Okay. At position 1 1 1, the electric field is at position 1 1 1, the electric field is 2i plus 5j plus 4k. Like that, we can determine the electric field with potential function
If electric field is only in one direction, then it will be just minus of dV by dx. Yes, boss. You understood? Electric field is minus of del V by del R. It is not a normal differentiation. I'm using not in normal differentiation. What does that mean? Only and only when it is three dimension like x and y and z. It is changing in 3D, like all the three components are changing, then only it has to be potential gradient. If electric field is only one, if electric field depends only upon one coordinate, maybe it is only in x direction or only in y direction, then it becomes a normal differentiation. If electric field is only in x direction, then E will be equal to simple minus dV by dx. Now this we can also calculate with the help of the slope of the graph. Electric field will be minus times slope of Vx graph, potential versus position graph, minus times slope of Vx graph. Right, and if electric field is uniform, then the differentiation dV becomes delta V and dx becomes delta x or delta R. If electric field is in x direction only, it is minus dV by dx, normal differentiation with respect to x.
Differentiation is also given by the slope. Differentiation is also given by the slope, that also we can directly calculate. Right. If electric field is uniform, तो uniform के लिए हम directly calculate करेंगे delta V upon delta R. If electric field is uniform, then E can be written as minus of delta V by delta R. dV becomes delta V and dr becomes delta R. Right? Minus of delta V by delta R. This is simple. Now delta R, and how do we find that? We'll understand in a while. What is exactly delta R here? Right. So we saw the method by which we can calculate potential using electric field or electric field using potential for all the possible variable cases. If electric field is only in x direction, if electric field is all the three direction, and likewise, we can also calculate potential. Electric field using potential and potential using electric field, both we can calculate. So this is a general formula when at x position x, y, z, at a position x, y, z, when we know the when we try to find out the position. Now let's go back to the all the standard cases, all the standard cases of position of electric field जिनके लिए हमने electric field calculate की थी. We can also calculate the electric potential by for all of those positions. Right. For example, electric potential due to a ring on its axis, electric potential due to a disk on its axis, electric potential due to a hollow sphere and solid sphere. Right. Suppose if we have to calculate the electric potential, then we have two formulas. First, if we can integrate, so हम पहले एक छोटा सा point charge लेंगे, we'll write the potential due to point charge, and then we'll integrate for the entire arrangement of the charge. Second, if we have, if we already know the electric field formula for that particular charge configuration, then we can also integrate. Electric potential due to a point charge formula is kq by r, so we can use we can select points and then integrate, or the other method we have is we can integrate from minus infinity to r e dot dr. Whatever the case, so we'll consider a small point charge in that configuration, and then we will integrate this electric potential. If we have to find for any charge configuration, multiple charges, then we can directly add them. Multiple charges, then we calculate potential and we add them. If it is a configuration of charge like a ring or like a disk or like a hollow sphere, solid sphere, infinite wire, then we have two formulas. Either we can integrate or we can use the electric field formula which we already derived, and we'll integrate E dot dr. So like first case is electric field on the axis of uniformly charged ring. Electric field on the axis of uniformly charged ring. Sorry, electric potential. Field तो हम already calculate कर चुके हैं. Electric potential on the axis of uniformly charged ring. Again, there are two methods, but electric field को integrate करने वाला थोड़ा लंबा होगा, and integration will be a little complex. So
we can use the first approach. Suppose the total charge on the ring is Q. Total charge on the ring is Q. Radius is capital R and the distance of that point is X. Distance of that point is X. We have to find the potential at this point P. So as we did for the electric field, consider a small point charge on in the surface on the ring. Write the electric field, and then we can integrate this. So integrate for the small charge. Consider a small charge dq on its surface. Electric field, electric potential due to this small point charge will be k into dq by distance. पूरे रिंग के लिए कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें उसमें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेना होगा. On the ring, electric potential due to this ring, this point charge. Electric potential due to this point charge. dV will become k times dq by r. कितना हुआ? The r distance. This r will become root of capital R square plus x square. उस पॉइंट P का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. So that become root of capital R square plus x square. टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन हमें वेरिएबल पे, बिकॉज यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री, इसलिए हमें यहाँ पे दो सिमेट्रिकल पॉइंट चार्जेस कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है. दीज चार्जेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसे जितने भी dq होंगे सबके पोटेंशियल को हम ऐड कर लेंगे, देन वी गेट द टोटल पोटेंशियल. सो नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, we will integrate net electric potential at point P. We will be integration of so k dq divided by root of r square plus x square. अब इसमें k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट. बचा क्या? dq. dq को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to capital Q. So potential on the axis of a ring is kq divided by root r square plus x square. K into q divided by root r square plus x square. That is the formula for electric potential on the axis of ring. X is the distance from the center and r is the radius. So ग्राफ कैसा बनेगा इसका? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर के लिए वी कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0. किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर के लिए x को 0 पुट कर देंगे, v आ जाएगा k q by r. k q by r, that is the electric potential at the center. And here q does not depend upon the charge distribution. चाहे ये charge uniformly distributed, जैसे यहाँ पे word जो पीछे लिखा हुआ था uniformly, even though it is non-uniformly distributed, it doesn't matter.
It has to be just the total charge क्योंकि यहाँ पे it is just a scalar quantity, just a number. The distribution of charge doesn't affect the potential. Q is just the total charge. Integration केवल dq पर ही हो रहा है. It will be equal to total charge Q. ग्राफ कैसा बनेगा इसका? V versus X. It is maximum at the center. X को 0 पुट करोगे तो ये maximum होगा and infinite distance it is going to 0. This is the graph of electric potential versus X on both the side of the ring. At the center it is maximum. We'll substitute X equals to 0. सर एक बार बैक चल लेंगे. इसको हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे, पर इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा लंबा मेथड है. Integration के लिए we have to substitute, use the substitution method to calculate that integration. Can you please go to the previous page? Okay, previous to this also. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. This is like the first arrangement, electric potential on the axis of uniformly charged ring. Now this word uniformly doesn't matter here. Even if it is non-uniformly charged ring, then also the potential formula will be exactly same. E is equal to V is equal to KQ by R. Q is total charge irrespective of the type of charge distribution. If total charge is 0, potential will be 0. Done? Yes, sir. Thank you. Right. So अगर suppose total charge 0 हो तो potential इसके center पर ही नहीं, potential इसके पूरी axis पे 0 होगा. Like question if suppose there is a charge, the charge density on this ring is given as lambda is lambda naught cos theta. Calculate the potential at the center. Calculate electric potential at the center of this ring. If linear charge density is given as lambda is equal to lambda naught cos theta, हाँ, so if it is lambda naught cos theta, इसका मतलब क्या हुआ? हमें potential निकालना है इसके center पे. What is the total charge? What is the total charge in this ring? First quadrant में cos theta is positive, 90 पे 0. Second quadrant is negative with maximum at 180. Third quadrant is negative, and again fourth quadrant is positive. इस छोटे से लेंथ पे जो चार्ज आएगा dq, dq will be lambda times rd theta. Lambda is lambda naught cos theta. Integrate this on both the sides from 0 to pi. Integrate this on both the sides to calculate the total charge from 0 to 2 pi.
total charge on the ring will be integration of this from 0 to 2 pi, and that becomes 0 to 2 pi lambda naught r cos theta into d theta. cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा में लिमिट लगाएंगे तो साइन 2 pi is 0 and sin 0 is 0. That means the total charge on the ring is 0. Since total charge on the ring is 0, potential at the center will be 0 only. सर r into d theta क्या होगा? बेटा r into d theta ये छोटा सा आर्क बनाया ना यहाँ पे थीटा पे डी थीटा का, इसका एरिया का है। तो ये छोटा जो साइज है स्मॉल आर्क, डी क्यू क्या होता है? लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ दिस आर्क लेंथ इज रेडियस इनटू एंगल. फ्रॉम द एक्सेस पोजीशन थीटा पे हमने एक छोटा थीटा की पोजीशन पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया, दैट इज डी क्यू. इट मेक्स एन एंगल डी थीटा, और डी थीटा का जो यहाँ पर एंगल आर्क लेंथ होगा दैट इज आर टाइम डी थीटा. सब्स्टिट्यूट आर डी थीटा, इंटीग्रेट, टोटल चार्ज 0 आ गया. सिंस टोटल चार्ज इज 0, पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, दैट विल बी 0. And it is not just on the center electric potential at the entire axis, because axis पे भी पूरी axis पे भी k q upon root r square plus a square. If q is 0, potential is 0. Right. ये आ गया एक्सिस के रिंग के लिए, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग इज के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. Maximum at the center for a positive charge and minimum at center for positive charge. Clear? Next is electric field due to a uniformly charged disk. Electric potential due to uniformly charged disk. Due to uniformly charged disk on its axis. Uniformly charged disk of surface charge density sigma. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें इसके एक्सिस पे. How do we calculate? X distance, R is the radius. Just a second.
Electric potential due to uniformly charged disk on its axis. Disk के axis पे calculate करने के लिए we will consider it a combination of ring. Disk can be considered as combination of rings of increasing radius. और ऐसे एक ring का हम पीछे calculate कर चुके हैं. So then we will integrate this for the entire disk. R distance पे dr thickness का हम एक छोटे से ring consider करेंगे. We'll consider a ring dq. Consider a ring of radius r, thickness dr, and potential due to that dq is dv. Consider a small ring of radius smaller, thickness dr. On the disk. Electric potential due to this. Electric potential due to this disk, we can apply the formula that we derive for a ring. Ring के लिए formula क्या है? KQ by root r square plus x square. So electric potential due to this ring having charge dq. It will be k times dq divided by root r square plus x square. अब dq को sorry ये r कौन सा वाला होगा? ये छोटा वाला r होगा. This is the small r square plus x square. बड़ी डिस्क में हमने एक छोटा सा रिंग कंसीडर कर लिया और अब इस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है. Electric field due to this ring, and then we'll integrate this for the entire disk surface starting from 0 to capital R. dq का dr से क्या रिलेशन है? dq is the ring of radius r thickness dr. dq will be charge density sigma. The surface charge density on the disk is sigma. Surface charge density multiply by total area, और area ring का होता है 2 pi r dr. We have already done that. dq को लिख लेंगे sigma into 2 pi r dr, and then we integrate this over. So dv is k into sigma into 2 pi r dr divided by root r square plus x square. Sigma into 2 pi r dr. K को लिख लेंगे 1/4 pi epsilon naught sigma into 2 pi r dr divided by root r square plus x square. 2 pi से 4 pi gone, sigma by 2 epsilon naught r dr divided by root of r square plus x square. सर मुझे ये समझ नहीं आया क्यू सिग्मा इनटू 2 पाई आर डी आर कैसे है? मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? चार्ज पर एरिया. हाँ. ये रिंग कंसीडर की है, इसका रेडियस कितना है r और थिकनेस कितना है dr. So this becomes a ring. रिंग के रेडियस है r, थिकनेस ब्रेड एरिया के इनटू सरफेस सरफेस. बॉडी से टोटल एरिया. इसको कट करके स्ट्रेट कर दो. ये तरीका है कि आउटर माइनस इनर करेंगे, बट वो आउटर इनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. कट करके स्ट्रेट करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 pi r और ब्रेड्थ आ जाएगी dr की. Length into breadth is area of a rectangle, so this rectangle area will become
2 pi r into dr multiplied by charge per unit area, which is sigma. Correct? Understood? Yes sir, thank you. Okay, so अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. Net potential on the axis इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to capital R. कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ऐसे इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं. फॉर दिस सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव टू यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन में क्या r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t स्क्वायर, put r square plus x square as t square, differentiate 2r dr, x तो constant है, is equal to 2t dt. So r into dr is equal to t into dt, sigma by 2 epsilon naught t dt, और नीचे आ जाएगा t. Put small r equals to 0, तो ये 1 तो गॉन हो गया, टी गॉन, बचेगा dt. सिर्फ dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, एंड t की वैल्यू आ गई रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो t आ जाएगा, विच इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू t, लिमिट फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R. t को r के टर्म्स में पुट कर लेते हैं. सो पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, sorry, small r square plus x square, r starting from 0 to capital R. Sigma by 2 epsilon naught capital R square plus x square minus x. Electric potential on the surface on the axis of electric potential on the axis of a uniformly charged disk at a distance x from its center. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला याद हो, तो आप वहां से माइनस डी वी बाई डी एक्स करके भी देख सकते हो, या v को हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स. बेटा आ गया समझ में कैसे किया इंटीग्रेशन? Can you draw the graph of this? At the center now potential is sigma r by 2 epsilon naught, और वो आगे की तरफ डिक्रीज ही होता जाएगा इन्फिनिटी पे. It will decrease to 0. सर सेम जैसा ही होगा ना ग्राफ तो.
सिमिलर ऐसे होगा, केवल रेट ऑफ चेंज केवल कम होगी, डिफरेंट होगी, ग्राफ शेप विल बी सिमिलर, करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया रिंग के एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया डिस्क एक्सिस पे। नेक्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर एंड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अभी हमने दोनों में क्या किया है, वी कंसीडर अ स्मॉल दैट इंटीग्रेशन अप्रोच, इंटीग्रेशन अप्रोच से बेटर है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर लें, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। Okay, how do we do that? Electric field, this is the third case. Electric potential due to a hollow sphere. Electric potential due to hollow sphere or spherical shell. Spherical shell of radius capital R having charge Q on its surface. हमें इसकी potential calculate करनी, just like we had two different formula for electric field inside and outside. Similarly, we will have two different formula for potential also for inside as well as outside. So instead of using that integration, हम electric field के formula को integrate करके calculate कर लेते हैं. For a spherical shell outside the shell, electric field is kq by r square. At any point inside, electric field is 0. Electric field is 0. So जब हम आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो हमें करना क्या है, हमें इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लेके आना है, उस पॉइंट तक रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो जो पोटेंशियल आउटसाइड के लिए फॉर्मूला होगा दैट विल बी माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r E out times dr। Outside electric field is how much? kq by r square times dr. kq by r square times dr. So integrate kq by r square, kq बाहर आ जाएगा, 1 by r square integration is 1 by r square integration is minus 1 by r infinity to r, minus minus plus हो गया, kq by small r, this is the potential outside a spherical shell or on the sphere, q upon 4 pi epsilon naught r. Outside at any point, electric potential is similar to that of a point charge kept at that center. Center पे अगर हम सारा charge assume कर लें, we can calculate the electric potential, we can calculate the electric field, and similarly we can also calculate the potential. For any point outside, field and potential can be calculated by assuming the total charge to be present at the center. अब आते हैं inside, at any point inside the shell, when r is less than capital R, for any point inside हमें अंदर किसी point पे center से r distance पे we have to calculate the, again they have to start from infinity और infinity से start करके इस point तक आना है. We have to start from infinity to this point and electric potential of this point P. So again we use the integration method. Potential at this point inside. करना तो हमें इंटीग्रेट है इंफिनिटी से r तक, लेकिन इंफिनिटी से r तक it is not the same, it is changing.
electric field is changing, so we will break this integration from infinity to capital R against the outside electric field and capital R to small r against the inside electric field. We have to start from infinity, reach that point inside, but inside electric field is changed, electric field becomes zero, and that is why the electric field formula will be changed. So integration will be now from from infinity to capital R against the outside electric field. Outside electric field is k cube by r square dr plus capital R to small r against the inside, which is 0. Right? Okay. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अगर तो माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर के क्यू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 by r square integration is minus 1 by r, so kq minus 1 by r infinity to capital R, और ये तो जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट will be 0. This becomes plus k capital Q by capital R. Potential at any point, if in the previous formula means that one which is for outside, we equate R is equal to capital R, then it is the same potential. So potential at every point inside is constant and same as potential on the surface. Potential at every point inside is equal to same as potential on the surface. इसका रीजन ये भी है क्योंकि जब हम इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो केवल और केवल हमें सरफेस तक ही फोर्स फील होगा. Only outside there is a force, outside there is an electric field. As we enter inside, there is no extra work is required to be done. अंदर किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उतना ही वर्क करना है जितना कि सरफेस तक पहुंचने के लिए करना है. Inside, no extra work is done. So potential at every point inside is constant, Q by 4 pi epsilon naught times capital R. किसी भी hollow sphere के अंदर spherical shell, hollow sphere हो या अगर ये solid और conducting हो तो बात एक ही है. Solid conducting sphere के अंदर भी electric potential will be same at every point. Right? Okay, electric potential inside is constant, outside is inversely proportional to R. इसलिए हम इसको जब ग्राफ बनाएंगे, this graph will be P versus small r graph for the hollow sphere. ये सारे formulas आपको अलग से एक formula sheet में बना के you have to write it. तो एक formula sheet में ये सारे formula बना के लिखने हैं. अंदर constant है KQ by capital R, बाहर KQ by small r. It is constant inside. इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ पॉजिटिव ही होगा बिकॉज द ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल इज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड लाइकवाइज फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है. दिस इज inside potential is constant and same as potential on the surface. Outside potential start decreasing inversely proportional to R. राइट बेटा समझ आ गया. ये हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल के लिए हाउ डू वी कैलकुलेट द पोटेंशियल.
पोटेंशियल हमने पहले वाले दोनों केस में इंडिकेट करके किया था ड्यू टू अ स्मॉल पॉइंट चार्ज. रिंग के लिए पॉइंट लिया था, डिस्क के लिए रिंग लिया था. होलो स्फीयर में, in the case of hollow sphere, because we already know the electric field formula, we use that formula to get the electric field. Right? Okay. Next is electric potential due to a solid sphere. Electric potential due to a solid, non-conducting, uniformly charged sphere. Number 4 होगा शायद. Number 4. Electric potential due to a uniformly charged solid non-conducting sphere. ना समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, No sir. doubt. Yes. No doubt. Very nice. अच्छा, इस वीकेंड से आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द डाउट क्लास जैसे हम लास्ट ईयर करते थे. I will take doubt class on Sundays only. Sundays evening after 7:30, from 8 to 9. So जो भी आपके डाउट है, because now you should be solving question from DPP, from SL Arora, from HC Verma, from XYZ resource that you have. FitG, Akash, VMC. I don't mind asking doubt from any resource. It should be related to the current topic. राइट. सो जो मेरी वाली बुकलेट है जेई मेंस वाली, जो आप जब भी कलेक्ट कर पाओगे, whenever you want to collect you can. Otherwise I will share the exercise PDF by today only. So उसके आंसर्स की भी हम उसमें डिस्कस करेंगे. Answers will be given in that particular class. तो इलेक्ट्रिक डाउट क्लास पोटेंशियल कौन से दिन होगी? बेटा संडे को रखूंगा मैं, होपफुली Okay, संडे sir. आफ्टर 7:30, 8 to 9 probably, if Yes. everything remains well at the terms and condition apply. वो थोड़ा अभी some students are also not able to attend the class because they have been affected by the COVID, the ongoing wave, which is very powerful wave. Okay, so no problem. We will continue our study. There is no harm in this study if we are doing it from home and in the online mode. So I think we'll start from the one doubt class, Saturday, Sundays. When required, I will add more. Okay, so that doubt class will be related to the first chapter, and you can ask the questions from all the resources, but relevant to the first, and given that you have tried that question, that is again the criteria. Again, किसी भी solid sphere के जो हम potential calculate करेंगे, we'll have again those two different reasons, outside this sphere and inside this sphere. Outside a sphere, R is greater than or equal to capital R. Outside at any point the electric potential. उसके लिए outside का formula use करेंगे electric field का, which was similar to that of point charge kept at the center. As long as it is uniformly charged, it remains same. Same as that of point charge kept at the center.
So outside के लिए electric potential will integrate this from infinity to r E out dot dr minus infinity to r kq by r square times dr. It will come minus of kq 1 by r square integration is minus 1 by r. So again the formula for electric potential outside becomes same kq by small r. So चाहे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी हो या पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज hollow sphere and solid sphere, the electric potential on field can be calculated by assuming the whole charge to be present at the center. Kq by small r or q upon 4 pi epsilon naught times r for outside. Solid sphere के बाहर electric potential and field both can be calculated by assuming the whole charge to be present at the center. Second, inside the sphere, r is less than capital R. For any point inside, now the electric potential will again be calculated by using the two separate integral, one from infinity to surface, another from surface to point inside. Start from infinity to surface and then surface to that point inside. Suppose at a distance r we have to calculate. Start from infinity to that point. R is equal to capital R against the outside electric field and capital R to small r against the inside. और inside electric field का formula था rho r by 3 epsilon naught, which is also kq small r by capital R cube. Infinity to capital R to small r against the inside. Infinity to capital R outside के लिए kq by r square dr and minus r to small r kq small r by capital R cube dr. So ये तो kq constant 1 by r square का आ जाएगा माइनस इसमें kq by r cube कॉमन r का इंटीग्रेशन आ जाएगा r square by 2 from capital R to small r. Potential at any point inside solid sphere substitute this limit. Small r square minus capital R square. इस पूरे में kq upon 2 r cube कॉमन कर लोगे ये नीचे r cube है 2 r cube क्योंकि सेकंड वाले टर्म में 2 r cube था तो पहले वाले में भी 2 r cube 2 r square से multiply divide it becomes potential at any point inside is kq by 2 capital R cube 3 capital R square minus small r square. Inside sphere, we calculated the potential with the help of E dot dr. Outside के लिए different field है, so we have different formula. Inside we have different formula, so integrate from capital R to small r. अब ये अंदर का जो potential है, ये ग्राफ कैसा हुआ? What is the shape of the graph? Y is linear, X is quadratic. Y axis पे potential है, X axis पे R है. Y is proportional to minus of X square. Y is proportional to minus of X square means it is डाउनवर्ड पैराबोला. So ये सेंटर पे मैक्सिमम होगी
at center put r is equal to 0, potential बन गया 3/2 kq by r, और सरफेस पे kq by r. Three by two kq by r, kq by r. Outside is inversely proportional. राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अंदर का पैराबोला और बाहर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सो हमने रिंग का कर लिया, हमने डिस्क का कर लिया, वी डिड फॉर द होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर. सो देयर आर टू मेथड, आइदर विल इंटीग्रेट v dot here or we integrate for a small point charge. We consider a small point charge first and then we integrate for the entire surface. Right? Okay, so potential, next class we will see due to the concentric spherical shells, potential due to arrangement of charges, energy conservation, and then ठीक है. Okay, I think that's it for today. Next Friday, first we will be discussing the previous chapters DPP and जो भी बची हुई थी 2 DPP शायद बच गई थी, and then we will start with the first DPP of this. That also I will share by today or maximum by tomorrow. ठीक है. Okay then. Thank you, sir. Thank you.